Hello, friends. Welcome. Um, Today I am here to explain you what we are going to do in tomorrow's workshop. From tomorrow onward, there will be 3 day uh, Photoshop workshop live online with live interaction, live question answer session, and you will get certificate after completion of this workshop. Now, I like to share something about Photoshop and why it's used and why this is beneficial for you all, whether you are student, whether you are homemaker, whether you are professional. It no matter whether you are a artist or you willing to be an artist or you are not an artist. Photoshop is an essential tool in our day-to-day life right from our childhood. We have many memories. um, some of us may have come from a black and white background where we used to have those small reels. Today also I have some my old memories in black and white reel. So I use Photoshop generally to make it digital color that reel, or to improvise that reel into digital image, so that I can long lastly uh, save those images. Now, these things are very important in our day-to-day life. It actually solves many of the issues. For instance, I have to immediately take out a photograph of mine for a passport. I have to run to a color lab for an e-passport. In some countries, for example, Indonesia, we can upload our photographs. We don't need any color lab license or stamping to make visa. So we just have to upload our photograph for e-visa or on visa on arrival form. In that case, we can easily uh, get our photographs done, improvise a little bit of it in Photoshop, so that, for example, background, in my background you can see a crack, and if you take this photograph, you have to again switch over to color lab or somebody who can help you out to just edit this crack, edit the background, edit the color of the background, edit your fair complexion, and all those things. So these things are very important in this classroom, in this workshop. In this workshop, you will learn lot more things, and lot more things you have not even think of. For example, masking. Masking is one of the advanced technique in Photoshop, but we are providing you masking. Masking is a very important and very essential tool in Photoshop. In Photoshop, basically we use masking to uh, get immediate effect, or the simplest way to edit something. I can tell you one example. For example, you are uh, cutting out a vase from a background. For example, there's a vase and this is a background. So you have to separate both the things, and you have to make the vase out of that. So one thing is to just take a very toiling process, very hardworking process to get all the outlines from the top, and then after getting the outlines from the top, you a tumbler full of commands you have to remember, and then you have to do all those tasks to get it out. Second process is masking. The masking is the easiest process. You just make it out a color, and then after masking a couple of steps, you get your result. So it's a ultimate thing.
Excuse me. So it's the ultimate thing. Sorry for the interruption. We're masking, and then we will also learn something about the color correction. We will learn about tools, all the tools which is there in the left hand side of the Photoshop. And right side, you will find many documents. For example, histogram, brushes. You can modify brushes into tiny brush to a thick brush. Any type of brush you can make through Photoshop. Photoshop is an unbelievable, a simple platform. There are many people, many not are there, but many people are there very thinking that Photoshop is very toughest, very tough thing, and I can't do it. Even I am also thinking that when I was in class 9th or 10th, it was in the year 2000, and later on I found it is very easy software. Through my all experiences I found it, but now people are there who can modify it to tough one, and people are there who can teach you in a simplest way how to use Photoshop. So Photoshop can be used in any area, in any condition. It's a very simplest software ever. Adobe has launched this software many years ago as Image Pro, and then they have transferred their name from Image Pro to their name from Image Pro to Photoshop. Uh, in our course, will get many benefits. For example, we have a blog, power of one blog, where you can post after becoming a member of Ecoskillarts, after a class in Ecoskillarts, after a session in Ecoskillarts. You will get access to public forum in power of one blog, where you can share your views, your comments. You share your creative post. That's a special bulletin we have through Ecoskillarts, and Ecoskillarts also provides you how to install Photoshop. There are our teams who can reach you. Those who have enrolled already may know that their the regular email you are receiving from Ecoskillarts, and also you can see uh, there is a schedule you have got through email. So we will be providing you firstly timetable. We are doing, we strictly follow our timetable, and you can get extra classes if you found some doubt while this session. We are help. We can provide you extra classes without any cost. So Photoshop, we will be providing you some e-documents. In this e-documents, you will find some books, our brochure, our everything under the sun regarding Photoshop. So it's a bonus thing for you all, because actually its fees is quite high, but we have reduced it to a reasonable cost so that everybody can afford, especially for ongoing school students who are now sitting at home, very busy in online classes. Though I'm there to make it little bit more busy, it's not like other sessions. Actually, in this session of Photoshop, you will get to know many things more. For example, in other live courses or in other recorded online sessions, you will hear that people are there. You can just log on, you just read it, or you just hear, listen it, or you just watch it, watch the video, get your certification, and that's all. But in our case, it's not like that. Sorry. Then you have to submit
each and every day assignment given to you in the live session. You will get certificate after the completion of the course. There are many more things, that is that attendance is important, because in your certificate you will it will be published what marks you have obtained in this session. So everything is there. So it's a proper course. It's not a fraud one. Sorry to say, there are a number of courses in our country and other countries where people used to make fraud about these courses, and very sorry to hear that, being a faculty of government. But still, I see very good people are also there. For example, many of the sites I know who offer these type of courses, but ours is basically deals with live interaction, live question answer session. Any student, any single student have any doubt, we are here to help them. In this live, after this live video, I will share as a comment about all the details of our course. You can also log into our YouTube channel, Ecoskillarts, and there also you can see all the details. um, we are also available in allevents.com, where, and also in www.ecoskillarts.com/online courses. So there are platforms, you can register yourself, you can brought a ticket for yourself. Let me share some story, a nice story. Hope you will also enjoy. At the time when I was there in college, I don't know about Photoshop. I was there in first year. So at that time, I feel very difficult to handle Photoshop. I used to take the help of the student. Uh, yeah, Misha has shared some comment. Is Photoshop the same as Photoshop CC? Yes. Actually, CC is actually Creative Cloud. It's a version of Photoshop. Photoshop has started from way back in Photoshop 1, which we known as Photoshop R1. And then it came, today it's now Photoshop 2020 2.1. This is the latest version of Photoshop available till date, and we are providing you Photoshop 6 CS6. So that it will be common for you, it will be common for all the users, all the platform users. So coming back to my story, in the earlier days when I was there in first year of my college life, I find it very difficult, and then I found some faculty of mine who has taught me Photoshop in very easy way. You will laugh listening to it that I get afraid to use eraser tool, use marquee tool, and I don't know what are they are used for, how to crop files, how to save files. I have basic now. I don't have even the basic knowledge of Photoshop. He taught me. And then I found Photoshop is a one of the easiest platform ever I have seen while doing any type of editing, any type of photo editing. For young professionals who have just started their career, they have just started their startup, need Photoshop. Why they need Photoshop? First, to make your own business promotion, to make your business, you can say,
promotional activities, for example, brochures, flyers. Uh, in advertising line, we used to tell as above the line advertising and below the line advertising, pamphlet, anything. Or if you are making a video in After Effects or Premiere or FCP for Mac users, uh, you need this Photoshop to make a background of this video. If you want to make your label, make your logo, and you can put that logo in the corner or place it logo in the center as well the beginning of your video. You can every time do it by Photoshop. And Photoshop is a marvelous thing for homemakers also. Photoshop is necessary not to start a business, not to start your own company, not to start a new organization, but to upgrade yourself. Sorry to say, in India, we are a little bit biased. Still today, we are also biased towards gender. The moment we think about woman, housewife, homemaker, we always remember that, yeah, she can't do anything. She has nothing to do with Photoshop. Why to make her literate in computer? But it's very important. So I request each and every housewife in India to please register yourself in this course. This is a grand opening for you, a good opening for you to enroll yourself, to learn something which can motivate your moral, which will boost you. In India, uh, our Prime Minister, our Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, Modi ji, every time talking about skill India, skill India, skill India, but still people make a laugh of that. Few people genuinely obey that, but most of the people make laugh of that. What will happen after skill India? People, many things will happen after skill India. Skin after Atmanirbhar Bharat Abhiyan, many things will happen. People will do their task on their own without any help. This will upgrade their moral, upgrade their confidence. So become self independent is to become independent is a major perspective of a human. So request I request you all to become independent. Don't you depend upon any other to do your simple things. For example, I today I go to market and see many regarding this course. I have it's a coincidence you can say, but I have seen a lady, an old lady, coming to the shop and asking the ओके भैया मेरा ये पुराने पिक्चर हैं, मेरा बेटे का जन्मदिन है तो उसके बचपन के फोटोग्राफ्स हैं, उसको आप सही करके दे दीजिएगा. You know how much the lab, the color lab wala charged? One photograph cost 100 rupees to edit. If you know this technique, it will cost you 0 rupees and it will help you not for one photograph.
You can create photographs. You can change the background of the photograph. You can change the color code of that photograph because of many reasons. I am thinking something and I am telling it to that color level, photograph wala. Photograph wala will not do as he is, uh, he or she is telling, because his frame of mind is different than the client. But if you learn photograph for yourself, for your confidence, you will make your own creation. You will develop your own expressive style and you will present it to your own relative or your own somebody. This will help. And the person, after they know you have done all the editing in photograph, you have done it in your own, he will find it very impressive. Maybe he will tell you to teach how you have done that. Because in 130 crore people in India, I bet you even 50% of the population don't know photographs, the photograph editing. In short, Photoshop. 50% of India. This is a bad thing. This is a depressive thing, being an Indian. I I have to make my own cooking class. Many of the housewives in India make good food, and I am very hungry after telling about foods and all those things. I am very foodie type of person. In India, people make very tasty foods, very delicious foods, and many and their child or their relative tell them, Amma ji or Auntie ji or Didi or somebody, uh, आप बहुत अच्छा खाना बनाते हो, आप कुकिंग क्लास का क्यों नहीं बनाते या अपना एक किताब क्यों नहीं लेते? उस टाइम each and everyone, मतलब if many of us think how to promote that, हम उसको कैसे प्रमोट करेंगे? हम प्रमोट कर सकते हैं इसको, हम हैंडीकैप नहीं हैं, हम अपने आप को हैंडीकैप बनाते हैं। जब हम बात करते हैं कि बहुत अच्छा खाना बनाते हो, जब हम बात करते हैं कि कुकिंग क्लास खोलने का, अपना ऑनलाइन क्लास खोलने का, उस समय हम लोगों को ये ध्यान में रखना चाहिए, अगर हमें फोटोशॉप आता है तो हम इजीली अपना घर में छोटे छोटे कैमरा होते ही हैं, सबके मोबाइल फोन में कैमरा है, वो पिक्चर लेके अच्छे से उसको एडिट करके आराम से अपना प्रमोशन कर सकते हैं। क्योंकि जो अच्छा खाना बनाता है उसके मन में अच्छे भाव भी होते हैं, वो अपने भाव को टेक्स्ट के थ्रू लिख के प्रकट कर सकता है और हमारे ब्लॉग में वो पब्लिश कर सकता है। हम उसको प्रमोट करेंगे,
और हम खुद भी आएंगे खाना खाने के लिए, क्योंकि यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज, प्रमोशन। हम सब लोग में कोई ना कोई क्वालिटीज है, कोई ना कोई विचार, अच्छे विचार हैं, सुविचार, पर हम कोई भी उसको प्रमोट नहीं करते। हम सब फोटोशॉप को सीखना चाहते हैं, सोचते हैं कि यार अगली बार सीख ले, अगली बार सोच ले सीखने का, व्हाई नॉट दिस टाइम। ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आप अपने आप को हमारे इस एक बार इसमें एनरोल करके देखिए। इको स्किल आर्ट्स ज़्यादा पुराना ऑर्गेनाइजेशन नहीं, 7 साल हुए हैं, 7 साल नहीं हुए हैं, 7 महीने हुए हैं। पर अगले आगे तक हमें पहुंचाने के लिए आप लोगों का सहयोग जरूरी है। हमारे यहाँ पर बहुत सारे क्लासेस होते हैं। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग से हम लोगों ने अपना ऑर्गेनाइजेशन शुरू किया। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, बच्चों को एक ट्रेनिंग देना होता है जो वोकेशनल स्टडीज़ करते हैं, उनके सिलेबस में ये मैंडेटरी होता है, उसके बेसिस में इनको 3 क्रेडिट मिलते हैं। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग से इनको प्रोत्साहन मिलता है, इनका स्किल डेवलप होता है, और स्किल डेवलप होता है इसीलिए ये लोग आगे बढ़ते हैं। ये बहुत अच्छा विचार है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, वोकेशनल स्टडीज को प्रमोट करना। वोकेशनल स्टडीज वाकई में इंडिया में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि अगर स्किल ना हो तो फिर वही कहानी हो जाएगी कि गाड़ी चल रही थी, टायर पंचर हो गया, बरसात हो रही थी, गाड़ी के अंदर ही बैठ गए, और बरसात के बाद किसी मैकेनिक को ढूंढने के लिए गए हैं कि वो हमारे टायर चेंज कर दें। भैया जब गाड़ी हमारी है, टायर हमारी है, तो चेंज करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हमारी होगी। किसी और को पैसा क्यों दो, खुद ही चेंज कर दो टायर। आपका स्किल ही तो डेवलप हुआ है। फोटोग्राफी के लिए, छोटे से छोटे फंक्शन के लिए घर में लोग फोटोग्राफर बुला लेते हैं। अरे भाई, जब फोटोशॉप आपके हाथ में है, जब कैमरा आपके हाथ में है, तो काहे को इतना इतना करके घूमते रहते हो? क्यों आप घूमते रहते हो इधर उधर? मत घूमिए। आप अपने रिश्तेदारों को बोलिए एक एंगल फिक्स कर दीजिए, वहां से फोटोग्राफ खींचें, और खींचने के बाद आप खुद उसको एडिट भी कर सकते हैं, तो आपके सारे पैसे बच। आप ये वैसे ही कोरोना वायरस चल रहा है, फिर से पड़ोसी वाले किसी और को बुलाना पड़ेगा। पड़ोसी को तो फिर भी आप जानते हो, जो फोटो खींचने आएगा उसको आप कभी नहीं जानते, कभी नहीं पहचानते। आपने वो पैसे दे दिया, वो आके फोटो खींच के चला जाएगा। आएगा 3 दिन के लिए या 1 दिन के लिए, पर अगर बीमारी आ गई आपके घर में तो हो गया फिर सत्यानाश। तो सबसे बढ़िया है आप खुद कर लीजिए ये काम, क्यों दिक्कत देते हो बाकी लोगों को। एक सिंपल सा फोटोशॉप सीखने से आपका बहुत फायदा होगा, बहुत फायदा। अभी हमारे पड़ोस में किसी की शादी थी, अब कोरोना वायरस के टाइम शादी थी, अब क्या कर सकते हैं, लगन नहीं मिल रहा है, तो अब जब शादी है आ गए, अब फोटोग्राफर को भी बुलाए हैं। अब फोटोग्राफर, शादी में छोटे छोटे फंक्शन भी होते हैं, और फिर बोलते हैं फोटोग्राफर भैया इतना पैसा क्यों लेते हैं? अरे भाई मत मुँह तो बुलाओ फोटोग्राफर भैया। आपके घर में बहुत रिलेटिव हैं, आजकल हर बच्चे के पास फोन है, हर बच्चे के पास छोटे छोटे फोन, बड़े आईफोन है, वन प्लस है, चाइना तो बैन ही कर दो, चलो चाइना छोड़ दो, बाकी तो फोन है, उससे आप फोटोग्राफ तो खींचते हैं।
आप फोटोग्राफ को बड़ा सिंपल प्रोसेस में फोटोशॉप में एडिट कर लो। अच्छा, मान लीजिए आपने हमारा सेशन मिस कर दिया, तो क्या होगा? अब बहुत लोग बोलते हैं कि भाई हमारा तो स्कूल है, हमारा कॉलेज है, हमें ऑफिस में जाना है, तो जाइए ना, हम रोक नहीं रहे हैं। आप फोटोशॉप के लिए एनरोल अगर हैं, आप अगर वाकई में सीखना चाहते हैं फोटोशॉप, हम आपको हमारे रिकॉर्डिंग दे रहे हैं, जो एनरोल किए हैं उसको हम अपना रिकॉर्डिंग जैसे ही देंगे, आप उसको एक बार नहीं, दो बार नहीं, आप 1000 बार चला के सुनिए, हम मना नहीं करें। आप उसको डाउनलोड कर लीजिए, उसको सुनते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। इससे आपका फायदा है। आप इसको पॉज करके करते सुनते सुनते आप समझ सकते हैं, क्योंकि सबके समझने की क्षमता अलग अलग होती है। फोटोशॉप में जब हम सिखाएंगे तो आप लोगों के डाउट भी आएंगे। अब आपको ये लगेगा कि भाई उस टाइम मैं पूछूंगा, इतने सारे लोग होंगे, अब उस टाइम अगर पूछूंगा और मेरा सोल्यूशन नहीं मिला तो हम क्या कर लेंगे? तो आप दिक्कत मत लीजिए, आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस एक ईमेल लिखना है ecoskillarts@gmail.com। या आपको याद नहीं रहेगा तो कोई बात नहीं, हमारे YouTube चैनल में उसका वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, हम वहां से भी देख सकते हैं। वो लिंक में जाकर आप एक ईमेल दीजिए, हम आपके ईमेल का तुरंत उत्तर देंगे और 2 दिन के अंदर आपको स्पेशल क्लास, या अगर ज़्यादा कैंडिडेट है तो एक दिन फिक्स कर लेंगे 1 हफ्ते के अंदर, जिसके अंदर आप सबका डाउट क्लियर कर दें। हमारा एक बहुत बुरी आदत है इकोस्किल आर्ट्स की। अब हो सकता है हमारे लिए बुरी हो, आपके लिए अच्छा हो जाएगा, कि हम लोग क्लाइंट मतलब कैंडिडेट को हम पीछा नहीं छोड़ते। भाई अभी तक जो पहला जो बैच था हम लोगों का इकोस्किल आर्ट्स का, जो हमारी कोऑर्डिनेटर मैम को अच्छा याद रहता है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग दिसंबर 2019 से जनवरी 2020 तक, उस क्लास के सारे बच्चे आज तक हमें कांटेक्ट करते रहते हैं, भाई ये डाउट है, ये डाउट है, और सॉल्व करते रहते हैं। इवन जो उसके बाद एक इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग हुआ, उसके बाद हमारा स्वैग फॉर नेचर हुआ, उसके बाद हम इंटरनेशनल वर्कशॉप में भी पार्टिसिपेट किए। एक ऑनर हमें बहुत अच्छा कहने को, ये अच्छा प्लेटफॉर्म है, लाइव में मैं इन लोगों का नाम ले सकता हूँ। को में एक स्वीडन में एक वर्कशॉप चल रहा था, तो हम लोगों को उन्होंने एक अपॉर्चुनिटी दिया था अपने आप को प्रेजेंट करने का, तो थैंक यू को फॉर दैट। वहां पर हम लोगों ने अपने आप को प्रेजेंट किया। अभी इस फोटोशॉप के थ्रू से भी हम आप लोगों को यही कह रहे हैं कि ये एक बहुत ही साधारण सा, कुछ बड़ा कुछ नहीं है इसके अंदर, बहुत ही साधारण सा चीज है। ये बहुत ही इजी और सिंपलेस्ट वे में आप समझ सकते हो। घर के छोटे काम और बड़े काम, बिजनेस शुरू करने से बंद करने तक, वैसे बंद नहीं करना चाहिए, बिजनेस शुरू हो गया तो शुरू ही करना चाहिए, और सबका बिजनेस अच्छा चलना चाहिए। स्टूडेंट के लिए सबसे बोनस एक जैकपॉट फोटोशॉप। इस जैकपॉट को हाथ से मत जाने दीजिए। एक बार ये जैकपॉट अगर हाथ से निकल गई, फिर आप ढूंढते रह जाओगे, भाई 300 रुपए में कहीं फोटोशॉप मिल रहा है। वैसे 300 रुपए का आइडिया थोड़ा सा अजीब था, पर
हमने यही सोचा कि इतना रुपए तो सब एफर्ट कर लेंगे, क्योंकि अभी मैंने देखा है फोटोशॉप सीखने के लिए लोग 250 रुपये लेते हैं। 250 नहीं, 1500। मेरा हिंदी बहुत खराब है, आप सुन के समझ ही गए होंगे। 1500। फिर लेता है 4000 रुपया, फिर कोई लेता है 5000 रुपया, कोई लेता है 20 US डॉलर। भाई फोटोशॉप है भाई, इसकी जान मत लो। ये बड़ा ही इजी सॉफ्टवेयर है, इसको सिखाने के लिए इतना पैसे ले लेते हैं। सब बढ़िया चीज ये है कि ये 300 रुपये सबसे अच्छा कॉस्ट है। अगर आप इसको 15 घंटे का कोर्स है, अगर आप 300 डिवाइडेड बाई 15 करें तो कितना आता है आप देख लीजिए। तो प्रति घंटा आप कितना देते हैं ये भी देख लीजिए। तो इससे सस्ता अगर आपको कोई कोर्स मिले तो आप हमें जरूर इन्फॉर्म कर दीजिएगा, हम देखेंगे उसको। देखेंगे मतलब अच्छी तरीके से देखेंगे, क्यों क्यों होता है इतना सस्ता, कैसे कर सकते हैं। अब काफी लोग नए फ्री कोर्स चलाते हैं, हम ये फ्री नहीं है भैया, पेड है, 300 रुपया है, पर हम इसके बाद आपको बेनिफिट्स बहुत सारे देंगे। हमारा जो पहला सेशन है फोटोशॉप का, ये हम आपको लाइव रिकॉर्डिंग हम पूरे इंडिया के पब्लिक के लिए होगा। जाकि अगर आपके मन बने ज्वाइन करने का तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं और हम आपको एक लिंक दे सकते हैं जहां से आप एनरोल कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो पोर्टल है वो अलाउ नहीं करता और हम कोई भी रूल्स के बियॉन्ड नहीं जाते। हमारा पोर्टल अलाउ करता है 18 जुलाई, मैं फिर से कहता हूं, हमारा पोर्टल अलाउ करता है 18 जुलाई 2020 सुबह 8 बजे तक एनरोल करना। उसके बाद पोर्टल में एनरोलमेंट बंद हो जाएगा। हमारा पोर्टल सुबह 8 बजे तक ही खुला है। तो दोस्तों, अगर आपको इसके ऊपर कुछ डाउट हो, कुछ क्वेश्चंस हो, कुछ कंफ्यूजन हो, आप लोग इस कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और मैं तुरंत अभी आंसर दे दूंगा। तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू।